इसका था 500 कोर्स का था कितना पैसा लगा है उस कोर्स के लिए 18,000 कोर्स का बना अरे वो मैंने भी सुना मेरा कुछ कोर्स पर तो मुझे मैंने मैंने एग्जाम नहीं दिया वो वाली जो 10 में किया था वो टेस्ट ना उसका कोर्स का ये ठीक है मैं तो 9 में भी मीडियम में हां 9 में भी मीडियम 9 में दिया था तो उसके लिए कॉल आया मैंने मैथ्स पे लिखा वाह नीचे मैथ्स के लिए आया मतलब अच्छा है लाइक यू हैव लॉजिकल स्टेप्स वो बहुत बड़ा नाम क्या है चीज वो तो कुछ नहीं यार मुझे मेरी मम्मी ने मैम वाली ये तो सारा है ना वही हमारे सामने फिजिकल वर्क करने में सरकार वो लिखने में अभी तक अरे यार मेरी माँ ला सकती है फोन और वो भी आज स्पेसिफिकली अलाउ करती है क्या कोई काम नहीं कर लाउड में समझा है कि काम नहीं कर रही है मैं वो भी फिर मार को मूवी से फिर देखी है अंदर में कैसे मूवी कैसे नहीं मालूम है क्यों ये हमारे सब एग्जाम के पेपर लेना है मेरा एग्जाम अभी जून को नहीं कल एग्जाम है ना इसका वो एग्जाम हां मैंने पूरा करने का उसका पेपर पे तुम लोग को है वो जो ये बात कर रहा है रजिस्टर ईमेल में दोनों पेरेंट्स के लिए आता है किसके ईमेल में आता है देखो मेरी मम्मी ने मेरे को बताया अच्छा तो मम्मी को याद मुझे चेक करने के लिए मैं टेस्ट नहीं दी थी राज हमारे साथ तो सेवन देख रहा है हाँ तो वो आ रहा है पुलिस स्टेशन में तू कौन सा मैं बोला कि बोल किस
देखो कोई माल छोटा भी कोई बोला कहाँ है हाँ सेक्टर वो वैसा बोलना राशि दो और तेरा नाम क्या इसका नाम है इसका वो प्रज्ञा सर्च किया उसका पेन कैसे हम आपने माय लिटिल बैचलर ठीक है तेरा माय लिटिल बैचलर में क्या है वो उसका जो अलग था लेकिन देखिए अच्छा वैसे नाम है अजीना का हमने आज हिस्ट्री तो डबल भी वाली कुछ कर रहे थे तो लोग आगे कैसे बताएं हिस्ट्री के लिए तुम लोग को क्या सिलेबस क्या क्या करते हैं इंडियन पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट खत्म हो गया प्राइम मिनिस्टर ये चैप्टर बोल चैप्टर अरे इंडियन पार्लियामेंट चैप्टर तुम लोग को क्या होगा नाम में तुम लोग को क्या होगा यहाँ पे बैठो तुम लोग को पता है अरे वो बर्थडे होता है सामने अरे तुम लोग को क्या होगा वर्ल्ड वो पूरा ये मजा क्या है कौन से आते Good evening, sir. How many were saying good morning? From that side, I heard. Sit down, sir. Very good evening. Everyone have signed? Anybody left signing? Aryan is missing. And who's Akansha? You didn't sign, man. No, sir. You come here. Why are you in the last bench, first of all? And let me change the place. You come here. I told you last time I'll be doing this. Why did you jump from here to there? To disturb the poor child? No, that's not a problem. Or you are going to disturb the rich child? No, ऐसा नहीं दोनों मेरे दोस्त हैं तो दोनों को अब बहुत कम बात करते हैं, sweet of you. Good. And where's your friend? Last time he was sitting with you. Who was he? Wait. तो तू क्यों उधर जाके attachment है जरा? And you also. हाँ ठीक है, but backbone का issue हमको होना चाहिए भाई. You are young ducks, sorry, young giants. Sorry हाँ. And ये कौन है? अबिंजिया, is it? हाँ, but नाम कभी मैंने पूछा. और उसका नाम क्या था? जो It is Abhignya. ठीक. And who's this Vishisht? And Raj. अच्छा, क्या हो गया तेरा hair को? ट्रैक्टर ऊपर घुमा दिया. To be. And Pranati. अच्छा, Pranati. And who is Mayank? ठीक है, good. So are we? एक मिनट. अच्छा, Gargi is the first person. Who is Gargi? Are you Gargi? Sure. No change. I feel some change. This time you are not going to try me for like last time. You will be doing more. कुछ क्यों? मेरा सब दर्द बनेगा. नहीं, you love the board exam, है ना? सर साइन करना है. हाँ, sorry.
Chalo, let's quickly jump into the topic without wasting our valuable time. What was the last thing I have done? Seasons of India. I have completed all. Yeah. Okay. Like really nothing hard. I want all to keep talking to me with related to the topics. Seasons, did we complete all the 4? Okay. Now there is a small surprise test now. Sir. Yes. Very quickly, in next 2 minutes, one person will come and write all the 4 seasons as it was written in the book, in your note. Wait. And this I have been doing right from my 9th standard. Nobody does it. Coming to the school or the class without जो book last Saturday अंदर डाला आज open करके लेकर आए बराबर है every day when you are attending the lecture you should revise it अभी जैसे इधर आने के बाद भी कर सकते हैं because you got 10 minutes break हाँ he's ready good boy come अरे at least seasons like month तक मैं और किसी student को दे but the words should be the same and the order should be the same others meantime do it you got the time quick So today I'll be finishing this chapter. Most probably try to. What is this Gargi talking right? तू इधर आ जा. Gargi को not बोलना. नहीं इधर ही रहो. So last time's class everybody remembers it? Yes. How many were present? How many were absent last class? I said mentally. Everyone. Yes or no? No. Present. So अभी मालूम पड़ेगा mentally present है क्या absent. Just check the notes. Did I give all the 4 seasons notes? Yes. Notes in your notebook. Notes after sorry. But नहीं दिया. After Which season you want me to give? आपको लगता है कि volume वाला अच्छा नहीं है? Volume. Sir, अच्छा. Yeah. What is the reason? Monsoon की spelling को छोड़ हाँ? You getting the right thing. No, sir. Correct है spelling. You sit there. Monsoon की spelling Since correct 9th standard you are doing the same. Last class was tutor. क्यों? तू ये जो अभी कुछ बता रहा था. आजा. You go to that bench. And you come and sit here. इधर ही. He comes this late. देखो late has become a habit to him. No, I don't want to listen. Fine. Yes, written. Okay. You can. Hot and dry summer, southwest monsoon, retreating monsoon, cold and dry. ठीक है? My boy. 10th में इतना beautiful handwriting I never seen. I felt my handwriting was the worst. Okay, who will come? Praniti ना? Praniti ना? अरे क्या नाम ही पूछ रहा हूँ? हाँ सर. And so please come and fill up the bracket with the months. What is it? अभी तो बहुत टेस्ट देना ये तो सिंपल है. Shilas 110%. कर quick. Meantime अभी आपका next turn. अरे पढ़ाई के बारे में क्या किया मतलब क्या? Oh, that is a lift to me. So initial 5 minutes, you people will be doing this every day, so that you never miss reading the book. तू पढ़ क्या है? अच्छा क्या story है तुम दोनों का? इधर late आने का. You were running and he was driving you. पत्थर उठा के मार रहा था. क्या? Bicycling. सर अकेले छोड़ता है ऐसा नहीं हम उसको तालाब से उठा के लेकर आए थे. Thank you. Thank you. Spelling of December. Year or RE? February. Okay, sir. Good. So now out of this season, how many seasons did we explain on that day? All the 4 seasons? Yes. Now you have any queries, any of the season, please be very clear, because once I'm moving away from this chapter, then it's very difficult. I can tell a wonderful boy in Khargar, ICSE student only. He was first day missed my class. I don't know his name. ऐसा तो नाम वैसे भी याद नहीं रहता. Second day he came to my class. I gave him this marker pen and made him to write. And fortunately he was writing the everything.
and I made him to sit. फिर मैंने पूछा मैं तो तुझे last week देखा नहीं. He said sir this is my first day of my your lectures. I was very shocked. Sir आपका पूरा वीडियो देखा मुझे. I was fantastically enjoying the video and I remembered all the things that you have taught. तो देखो बच्चा मेरा वीडियो देख के सीख गया है. तो आप लोग तो मेरा लाइव परफॉर्मेंस देखा है. मैंने लाइव रिकॉर्ड था ना, तो बोलने का नहीं. Correct? It's just a simple, strict warning. Got it? How many mobiles are not in silent today? Check कर लो, check कर. नहीं लाया, very good. लाया है, गार्गी को पकड़ना. Where is your mobile? मुझे बता. पहले गार्गी का मोबाइल छीन लेता हूँ. एक बार 9th में ले लिया. अच्छा है? अच्छा अभी ले. तो क्या? We can crack. हाँ, IB का कंप्यूटर तोड़ सकते तो ये क्या है? Information and Broadcasting Minister का कंप्यूटर हैक हो गया. Anybody, those who are present, absent, अभी भी पूछ लो. I can tell it in a very nutshell. Okay, you come. I can give me a short name of yours. Pran. अच्छा जल्दी आओ. Now one more boy, you will come. मेरा होगा ना सर. अच्छा Pran. Draw me on that side. Southwest monsoon with that peninsula. आओ तो सही. अरे जल्दी आओ. The traffic jam. Go to that side. And you be ready with the northeast monsoon, the map. In fact, I'll help you. Give the first. Hey, you have to do the same thing but northeast. Correct? Where's your pen? Anybody without the pen notebook? ये बच्ची बहुत आगे चली. अरेबियन सी से भी आगे निकली. अरेबियन ओशन नहीं. अरे रहने दो ना भाई, रुको तो सही. देखो बेसिक्स में कितना गड़बड़ है. बाकी सब अपना अपना करेंगे. डोंट करेक्ट इट. आई विल डू इट. करो जो भी मैंने बोला. तेरा नंबर है नेक्स्ट. उसके बाद तेरा. I don't know. Nobody will help her. She will do it. What is that? Parts दिखाने या दिखाना. Southwest monsoon, how it enters India. एक क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन पूछ रहा है. And I forgot your name. After him, your turn. Last time. Then we'll start the chat. अच्छा है. Surprise. Nobody will help her. Why are you asking him? Very present on that day. Mentally absent था भी याद है. So mentally absent के लिए मुझे स्क्रीन ऑपरेटर का जरूरत चलेगा. मानसून डायरेक्टली यहाँ से जंप मार के उधर जाता है. ठीक. अच्छा. Next time I will be very hard at it. हाँ. रुक जा आराम से. These girls are little bit tricky. Clouds नहीं, सेम बनाना है. इधर बनाना. ये showing northeast monsoon. यार है कैसा बात monsoon बात है. Mark first Himalayas, Indian Ocean, Arabian Sea, Bob, everything. Bob लिखा है. B और B के जैसा वो भी है. Bob O should be small. What's the name? So nobody has touched the volume, not the notebook. Am I sure? So next time be on your toes. अभी पनिशमेंट नहीं दूंगा आज. नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ गड़बड़ दिखा मुझे, that same diagram you will be drawing 15 times full. हाँ वैसे क्या पूछा सर भाई. देख वो बच्ची ने कैसा बनाया. नॉर्थ ईस्ट मानसून इंडिया से कैसा बाहर निकलता है, बस उतना ही करना. And which part of India you get the rainfall? That's it. Did I give assignment of writing question answers in your? सर इतना दिया. एक बात बोलूं. अभी मैंने लिखा है. आपने दिया था. बोला गलती से कभी काम करता है ये लड़का. हाँ वो जो हमने मार्किंग किए थे like वॉल्यूम में,
वो आपने बोला लिखने के लिए। हाँ तो किधर है? सब लोग लिखा? How many have not written? पर आपने बोला होमवर्क नहीं है। हाँ तो बट you have written? क्यों? चलो अभी लिखो जल्दी finish करो. So that I am going to say. जो मार्क के ऊपर ये तो नया excuse. सर चीटिंग वगैरह झूठ बोलने का नहीं. So this is the final time. By the time these guys are doing, please write it quickly. हाँ हाँ that's it. अच्छा. ये भाई साहब ने क्या बनाया? No, it's okay. Who will come and correct northeast monsoon? No, you are right, but that's different thing you have done. That is west. आजा जल्दी northeast monsoon जैसा उसने बनाया. I need two more person. Southwest अभी भी incomplete है. Guys, start writing the one that I made you to write. Except this boy, I think nobody has written fully. Come on, start writing. मैं बता wrong नहीं है, but जो वहाँ करेंगे. नॉर्थ ईस्ट मानसून इंडिया से बाहर जा रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट का अंदर घुसा है. सर कीवर्ड्स लिखना है पूरा पूरा एक You have to explain me what is ICSE. Remember? Draw करके explain. And these two guys are today's paid. Next day you are the star performer. Coming Saturday. Acha. Southwest monsoon. Please, everyone, look at the board. As what's it? Okay. She has done. We have to show the arrow mark starting from Indian Ocean. You remember? I said these are trade winds. Why they are trade winds? Because they bring a lot of moisture with them. And they enter India from two sides. If you remember, I said Arabian Sea side say one, Bob side say two. यही तो दिखाना था. And for northeast, the monsoon winds moves away from India or out of India. ये कहाँ से अरुणाचल प्रदेश से सब इधर इंडिया में अंदर लिख रहा है. सर कॉलेज में देखा है. हाँ but ठीक है, but what I have shown you. ड्रॉ नहीं किया था देखो, there are certain students in the class I haven't seen. Each and everything whatever right they noted. I think Gargi करती थी 9th में. नहीं किया. अभी lazy हो गए. And even he does it. सर आपने इतना ही किया था. हाँ सर आपने अच्छा अभी कर. सर नहीं किया था. Sir, these winds bring rain which help in the ripening of mangoes. That is called Kerala mango shower. and Andaman and Nicobar. And it helps for the Okay, अभी कर लो. North East India से ऐसा बाहर निकलता है. As per the volume, हाँ give it to. Anybody left unsigning? ये दोनों लेट आया था ना? मैंने किया. जल्दी करके दो. So is this two diagram very much clear? So southwest is setting up in the month of June to what? September. Whereas northeast in the month of October to November. Now simple answer to simple students. You can come. Right, which is summer monsoon and which is winter monsoon. Quick. अभी तेरा भी बाकी. अरे रुको तो सही. हाँ अच्छा हाँ. नॉर्थ वेस्ट कैसे है? वो नॉर्थ ईस्ट है. साउथ का इधर उठा के उधर डाल. That is only for 1 month. This is for 4 months. Which is summer monsoon and which is winter monsoon? Out of these two. उधर तो 1 ही है. 2 इधर है. Which is wait. Which is summer monsoon and which is winter monsoon? This is winter. हाँ तो राइट दे. अक्टूबर टू नवंबर के नीचे लिखना. अक्टूबर टू नवंबर के नीचे. टॉप राइट. This girl is such a peaceful happy girl. इतना जोर से चिल्लाए तो क्लास छोड़ के भाग गया. Okay. Now you come down. Give the marker to. जल्दी करो. I'm wasting good deal, but I want this. ICSE को पहले दिन से स्क्रू टाइट करना. Which is the summer monsoon? Nobody. Others keep writing the things. Don't waste the time. अरे भाई उधर एक monsoon है, इधर एक monsoon है. चार थोड़ी है, तू इधर उधर बोल रहा है. हाँ, right.
Okay. Then write why it is known as summer monsoon. You come. Why it is summer monsoon? Good. You will learn. Even 9th standard, I remembered him. He has answered certain answers. Nobody will answer. Summer monsoon है ना उसके नीचे लिखते हैं. Summer monsoon. Reason. Because winds are coming from southwest. तो summer हो जाएगा. हाँ. Can anybody help him? Why it is called the summer monsoons? हाँ, tell him. During summer times, the land gets heated up faster. Therefore, due to the high temperature, there is a. रामायण बोलेगा तो सीता को छोड़ के अरे कैसे बोलो फिर? Begins in the month. Begins with the setting up of summer. Begins after the end of summer. Short or sweet बोलो. Begins during summer season really. So that's it. Who can tell me why it is winter monsoon? Wait, this child. आपका नाम भूल गया. अच्छा अभी पूछा था पहले. Thank you. Thank you. Sir, I have to do ICSE. हाँ तो करो ना. पहले ये तो लिखो. Sorry करो. ना नहीं बोलूँगा. Again it is spreading. करो ना. Because it's so difficult to teach. हाँ. Why it is उधर तो उसे लिखा है ना beginning of the summer season. वही है. Others write. Why are you looking piercingly into the book? To be late. That's true. I'm sorry. Go ahead. Code language. And she is also responding. I am away from that. Good. Now you draw a. Now she is going to Akansha is going to explain us what is ICSE and what is setting up for that. ज्योग्राफी नया तरीके से पढ़ाना पड़ेगा तुम्हारे वजह से. सब लोग अरेबियन ओशन लिखेंगे और इंडियन सी लिखेगा. मैंने कुछ नहीं किया. अरेबियन ओशन और इंडियन सी. सर ये वजह से. It's okay. I'm that's far away from Chargi. I'll give you the toughest part. What is it? To teach geography after next year. So, I'm flying to Europe next year. You are taking my place. Yeah, how does that get? तेरा कोई हाँ देख. Now show me the zone where exactly and tell me which time period does it set in. Don't show the southwest. पहला ICSE आता है ना. वो नीचे. Oh, company group. One has to come here. इधर. Then I am not saying anything. Wait. What's it? That's it. Good. Shut up. Want to say something? Thank you. तो बोलो. You always remember when they ask you in the map, show the zone of ICSE. अभी आकांक्षा ने beautifully अपना handwriting से लिखा है, but this is not allowed in the. They will be asking you to plot it. और इधर अगर आपने ऐसा लिखने का, correct? पूरा नाम भी नहीं लिखा तो चलेगा. बस हो गया. Whatever. Because in exam, I remember when I start this TOEFL sheet, I'll be very strict with you guys how to plot the places on the maps. Yes, ma'am. So why are teachers says to plot? Who, me? Like our teachers. You said teachers. You. Okay, our like school teachers said to plot towards the place. Left hand or right hand side. ना तो क्या रहता है वो भी बता देता. अभी you are showing a beautiful map of India. I have seen Delhi इधर है. Public ने ऐसा मार्क किया. कन्याकुमारी इधर मार्क किया. फिर गुजरात को लेके गया इधर. फिर कोलकाता इधर मार्क किया. अभी how does this? He is correct. He is correct. He or she. But look at the marking. Now let us give a very simple way. Same map.
तो इसको हम लोग लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट बोलते हैं। ये दिल्ली है, ये कोलकाता है, व्हाट डिड आई प्लेस देन, कन्याकुमारी, और कुछ अगर ये रन ऑफ कच्छ को दिखा रहा है, इधर लेकर आने का जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज एक्सट्रीम ना। Which appearance looks better? Simple. So normally, as per the map rules, it has to be all the right hand alignment. तो मुझे याद है बच्चा यहाँ से उठा के रुको सर, क्योंकि वो बेचारा ऑर्डर भी करते हैं, हम लोग नंबर भी देते हैं 1 2 3, because in board exam they might have given what is 1, what is 2, what is 3. No need to write also. आपने एरो मार्क डाल दिया, अगर 1 लिख दिया, ही अंडरस्टूड, बिकॉज उधर क्वेश्चन पेपर में है। I can teach you many tricks of maps. Is it okay? Yeah. Shall we go ahead? Dry, cool, winter, did I explain fully? Yes. Write down the notes. Quick. Good solid half an hour wasted. It's okay. Okay, how many people have deposited the phone like I am doing? How many are having the phone? Give it to me. Good boy. तेरा नाम स्वर्ण अक्षर से मेरा बुक में लिखा है। दे दो। कुछ गायब होगा तो इसको पकड़ना, किसी को पकड़ना है। How many else is having the mobile phone? क्या रे करीब? मैंने सुना आईफोन खरीदा कल जाके बीकेसी में, नहीं खरीदा? तेरा फोटो आया था आज तक। Nobody has a mobile here? Nobody? You? Okay, चलो let's start. Write this season I'm giving. Write it in a notebook. I'm giving the notes. During this season. During this season, India receives. You have to write. I am dictating. अच्छा वो भी देता हूँ। हाँ. During this season, India receives slanting rays from the sun. During this season, India receives slanting rays from the sun. Full stop. Second point. Slanting rays. Dry, cool winter. Sorry, cool, dry winter. अभी तुम्हारी language. It begins at the end of November. It begins at the end of November. I'll be very slow. Don't do this peekaboo activity. What exactly you guys say? Peekaboo मतलब क्या है? कुछ कार्टून कैरेक्टर है? Pikachu है. Peekaboo मतलब he is speaking what he is writing. Peekaboo. मेरा इंग्लिश तुम्हारे जैसा रिच नहीं है. Begins at the end of November. This season begins. तुम भी तो बच्चे ही हैं. At the end of November and end of the November and continues. आप लोगों ने December to Feb लिखा ना, उधर लिखो continues till Feb. And careful on this, child has written February rightly, but I am damn sure either pronunciation Indian doesn't have this, and spelling में तो और गड़बड़ करते हैं. How do you pronounce? February नहीं. हाँ लिख सकते हैं. That's correct. It's UA. You have to put your stress. That's correct. I teach English to a different level where I'm going, not now, maybe after some time for Europe for teaching. They want each and every alphabet flowing out of the mouth. And it's February. अभी अगर आपको phonetics सिखाना मेरे वैसा मैं उनको सिखाते समय ऐसा लिखता हूँ. ये Feb लिखा. They are very laughing. Sir, what is this? अभी प्रोनाउंस करो. February. Correct है? You will never find it. Thank you. All your blessings. हमारा बच्चा February. मतलब आराम से. February. Again wrong. अगर February बोला ये नीचे जा रहा है. अपना जो टंग वो नहीं जाना चाहिए. It's February. हाँ, correct. Then we are good with our local English. हाँ, good. Next point. Due to low temperature, entire country experiences
Due to low temperature, entire country experiences high atmospheric pressure. ओए लिखना. पीछे रह गया था. तो उसको इधर उठा के डाल, तू जा उधर. All in the opposite direction. Due to due to low temperature, entire country faces high atmospheric pressure. Full stop. Next point. The low pressure trough. The low pressure trough, TROUGH. The low pressure trough, UGH. Helps in the. Can you say which monsoon? Southwest or northeast? Northeast. Winter time में start होता है ना? Helps in the setting up of northeast monsoon. मेरे से पूछ लो. What do you have? Helps in the setting up of northeast monsoon. What did I say? The low pressure trough helps in the setting up of northeast. तू जो कैसे मिस्टेक करेगा? Sorry. Northeast, northwest किधर है monsoon? जरा अच्छे से बोर्ड में देख. किधर है? Anybody have seen northwest monsoon? Don't write any new monsoon जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ इंडिया में. जैसे इसने किसी ने तो बोला ना, ये क्या बोला उसने? नॉर्थ वेस्ट बोला और ये साउथ ईस्ट हो जाएगा. हाँ वो. Next point. Let us go ahead. Okay. Daytime temperatures are average. Daytime temperatures are average or moderate लिख सकते हैं. Average नहीं लिखा तो moderate with low nighttime temperature. With low, LOW, low nighttime temperature. Daytime temperatures are average with low, LOW, nighttime temperature. What is this style of sitting and what is this way of writing? और थोड़ा आगे. Next. वो आने का जैसा नाटक करेगी, बस उधर ही चिप करेगी. Next. The winds blow from land to sea. Is it correct? Southwest में जब आप लिखेगा क्या लिखेगा? Winds blow from sea to land. Very good. The winds blow from land to sea hyphen dry in nature. Incapable of producing any rain. Incapable. Dry in nature. रुको ना बहन, कभी ये एक पूछ रहा है, वो एक पूछ रहा है, बहन जी कुछ जरा भी ये नहीं. तू दूसरा था. Incapable of producing any rain. First of all, you know what is the general rules as when the teacher or the student asks, you should say pardon me instead of all repeating the same word. तुझे सिखा के भी कोई फायदा नहीं. अगर बाबा नेक्स्ट टाइम तू लेट आया ना, सोच ले बिल्डिंग में तू दिखना चाहिए बट मेरा क्लासरूम में नहीं दिखना चाहिए. I don't know any reason. I will allow Tom, Dick and Harry, but not this liar. All are colonial cousins. सबको मोराज में घूमने के लिए छोड़ देते ये आते थे. Write on the next and the last sentence. किसके लिए रुको? During this season, a sudden rise in temperature. There is a sudden rise in temperature during this season. There is a sudden rise. RISE. गलती से भी CE मत लिखना. Pronunciation is the same. RISE. Sudden rise in the temperature. That is C. This is S. Z आएगा उधर S आएगा. Rise in temperature with oppressive climate. Oppressive. OPPRESS. Climate. Known as, who can complete this? October heat. Put it into single inverted comma.
Now that's the end of our season. What do you call it? Cool, right? Now somebody was asking me कौन सा नॉर्थ ईस्ट नहीं दिया है? नहीं रिक्रूटिंग मॉर्निंग के मार्क्स नहीं हाँ अच्छा अभी कर देते हैं ना. Come down to page number 81. Is it 81? 82. It is retreating monsoon. Please everyone keep a pencil at your hand. No pens are allowed. Point number 1. Retreating monsoon के जगह पर ऊपर लिख लो it और this season लिखो. This season lasts from October to November. Point number 1. During this period which छोड़ दो. Open bracket from monsoon. The monsoon. So the monsoon starts retreating or withdrawing. First from north and then from the south. This is point number 2. Bhai tu jaldi ढूंढ ले. Where's your volume? Jaldi kar. Third point. Low pressure trough is gradually replaced by high pressure. Point number 3. Now you go up. That is northwest India. Na? In northwest India, intensity of low pressure decreases by the mid of September. That makes us point number 4. And make it point number 5. The monsoon retreats from most of the North India. देखो लोग ने carefully बोला retreats कहाँ से निकलता है बाहर? North India से. Did I make the diagram correct? North India से बाहर निकल रहा है. ये भाई साहब ने वो textbook ठीक है. It is correct only. They have shown the world picture. Yet we have to study India's picture. And you are whose picture? Whose picture? Nobody's picture. नहीं वो बहुत रंगीला है. मैंने देखा है उसको रोड साइड में. Parents picture. बेचारा parents. Let us go to the next point. कितना point हुआ? 5 ना? Yes, Mark the 6th point. Second point क्या? अभी रुक जा. बहुत जल्दी आया. अच्छा अक्टूबर 8 मैंने उधर दिया ना. No need to write. चलो that's it enough. Sir, second. अरे उधर गार्गी बैठी है ना. मुझसे पूछा. जोड़ो. I'm please बोल. Everyone come to page number. And now this part I am thinking little bit quickly because जो difficult part था वो हम लोग ने easily कर लिया. और मुझे मालूम पड़ा कितना easily बोर्ड में सब लोग ने आके what is that हिंदी word रायता फैलाया which I do not like it. Next lecture I will be very strict with you guys. Who is making all this nuisance? Sorry, no abusive word. Who is making all this wrong pictures? She has to do that same diagram 5 times 10 times. I will decide. Depends on the intensity of the mistake. Will do? Sure. Come to page number 75. Introduction of the chapter. ये सब मैंने पहले लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है. बस मार्क करते चले जाओ. India has, underline the word, tropical monsoon climate. जो वर्ड बोल रहा हूँ उतना ही मार्क करो. Anybody has extra pencil? Give it to your friend who is sitting in the last bench. Second point. It's much influenced by, underline only the word monsoon winds. Did I make 2 arrows monsoon winds के लिए? क्या बोला? Arrival and departure. वो भी लिखना. Good. Remember. Hey, you are from which school you say? Then next, due to the vastness of the country, variety of relief features, there are only underline regional variations. Interior of the country, underline continental type. What is the other word for continental type? Opposite है, extreme. नीचे लिखो extreme. कौन सा example दे सकता है इंडिया में? दिल्ली. नहीं आंध्र प्रदेश continental में नहीं आता. Right continental के नीचे extreme and right Delhi. Coastal areas are more underlined. Equable climate. Equable के पे कौन सा example? Mumbai. Coastal areas के पे Arabian Ocean. पक्का? नहीं मुझे तो ज्योग्राफी में Arabian Ocean दिखा. Arabian Sea लिखना. She is the leader and many followers. Arabian Ocean. आप लोग कभी वाशी क्रीक में कभी क्या बहुत बार गए रहेगा? ओशन की तरह दिखा क्या? कभी दिखा? वो तो मुझे तो सॉरी टू से वो गटर का पानी दिखता है ना? उसमें कभी भी वेव्स दिखा क्या? कभी नहीं दिखा. भाई बिकॉज इतना सारा उसमें क्रीक बन चुका है, बेचारा अरेबियन सी रोएगा. द सेम क्रीक गोज टू दैट पनवेल आल्सो, कांदेश्वर मानसरोवर.
उधर तो गटर से भी गंदा दिखता है। हाँ मतलब वो कंस्ट्रक्शन की वजह से हाउ दे कट। टुडे आई वाज डीप इनटू केडीएमटी। आई एम सो सॉरी। I and one of my friend, we are doing some project related work where I'll be a future teacher to my defense academy people who are going to police, army, navy. तो मैं टीचिंग में भी नया नया स्कीम करता रहता हूँ। He said सर आपसे होगा, मतलब डेफिनेटली होगा। थोड़ा मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा टीचिंग द कमांडोज एंड द सो कॉल्ड कमांडोज। अभी उनको मैं बोलूंगा चलो उठो मार्च परेड करो, तो बोलेगा ऐसा क्या बोला, मतलब कुछ बोला तो बात मतलब they are going to give exams and वो इधर नहीं यूटी से नहीं, that's my own program। तो आज मैं किससे मिलने गया, that was a real comedy। She was a commissioner of that area and वो that lady was so ordinary, simple looking। फिर बाहर बात करके आया ना, उसका वो बड़ा गाड़ी आया जिसमें वो लाल बत्ती था। बोले ये किसका कर रहे हैं, मेरे ये ऑफिस से बेचा है। तो बोला आप क्या काम करते हैं, मैं इधर की कमिश्नर हूँ। और लास्ट 1 आवर वी आर टॉकिंग, वो सब चालू था, मैं जरा कम बात कर रहा था। शी वॉज मराठी माणूस, तो मेरा जो फ्रेंड था ही वॉज ऑल्सो मराठी माणूस, तो चालू था आमचं असं झालं हे जांभळ असं मिळतात। मैं भी चुपचाप था। शी टॉक टू मी जांभळ, जांभळ क्या बोलता है, फ्रूट ना। शी हैड अ ट्री एंड वो बोला ये गोड है, असं है तसं है। जांभळ म्हणतो, जांभळ। द प्रोनाउंसिएशन विल चेंज, हमारा साउथ इंडियन प्रोनाउंसिएशन ना सेम। तो क्या हो गया, जब मैं बाहर आया तो मैडम से बात हुआ, बोला आप क्या करता है, मैं टीचर फॉर इकोनॉमिक्स। वेरी गुड, आपका ही मुझे बहुत जरूरत है। बोला हाँ मुझे भी जरूरत पड़ेगा कभी कमिश्नर का, तो मैं हाँ एनी टाइम। तो व्हाई आई एम सेइंग, देखो व्हेन यू हैंड अ सिंपल हेल्प, द बिग हैंड विल कम हियर, बट इफ यू डोंट हैंड अ सिंपल हेल्प, उधर से कुछ भी नहीं। डोंट एक्सपेक्ट, जो भी जहां भी जो भी दिखता है आपके नजर के सामने, कोई तकलीफ में हेल्प करके निकल जाओ। तकलीफ में तो यही रहेगा पहले, या तो तेरे वजह से और 10 लोग तकलीफ में। क्यों इतना रिक्वेस्ट से भगा रही है उसको। चलो आ जाओ भाई। अच्छा यू सिट, यू गो टू द लास्ट बेंच, ही लाइक्स द लास्ट बेंच। जा जल्दी जा, जाओ जल्दी। लास्ट वाला नहीं उसके पीछे विंडो है। No, you want the demon to sit here? He's such a wonderful, silently आगे का adjective band है। देख गार्गी तुझे कितना वेलविशर करके जा रही है। इसको हम लोग आइलैंड पे छोड़ते हैं, उधर का सारा जानवर फिर इधर भाग के आएगा। अरे भाई उधर जाना, अच्छा ठीक है जा जा जा, तेरा साइकिल पार्टनर है, बैठ। चलो आगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। एक ग्रेट डिग्री ऑफ वेरिएशंस लिखा and following examples general. Distribution of temperature, write points now. This they are going to ask you. Underline point number 1, seasonal variation. Place to place, region to region. Hey, what does this variation means? Changes Very in the good. temp. Good girl. Write down changes. देखो मैं तारीफ भी करता हूँ ना, thank you बोला। Thank you, sir. You are most welcome. Next point, Barmer in Rajasthan. Barmer. R is absolutely fine. बारमर लिखो, क्योंकि मैं ऐसा बोलता था एक बच्चे ने बार पर लिख के दिया मुझे। 48 डिग्री टू 50 डिग्री ब्रैकेट में डालो एंड अंडरलाइन जून। पहलगाम एंड गुलमर्ग, अंडरलाइन राइट 22। देखो सेम टाइम में कहाँ 40 के ऊपर और कहाँ 20 के नीचे है, मतलब 22। कारगिल अंडरलाइन -40। एग्जाम में नहीं, अपना यूटी नाउ स्टॉप करेक्टिंग। एक बच्चे ने -40 ऐसे लिखा है, सॉरी। हाँ तो मैंने पूछा ये क्या है सर, -40 ये क्या है सर, वॉल्यूम ऐसे ही दिया है। माइनस माइनस प्लस। हाँ तो वो बच्चा को शायद थोड़ा सा इसके तरह एंटीना चमक गया लगता है। माइनस सामने लिखा है, बस उसको लगा वो वर्ड है। अच्छा सर वही मैं सोच रहा है माइनस क्यों लिखा है, अरे बुद्धू यही उस लोग ने लिखा है। Because proper English में you are not allowed to use even this also. You have to write FORTY. हाँ, you are not allowed to write in between the sentences. चलो -40। चलो प्लस हो गया ना। आगे let's go ahead, don't waste the time। ये hardly हो गया। कारगिल -40, circle that word December। केरला 20 to 22,
They did not explain. जब पूरा इंडिया में विंटर होता है, you go down to south, the South Indian annas will be having lungis, क्योंकि उधर 30+. अरे इसमें क्या है बेइज्जती? लोग का अटायर है. आप तो नहीं पहनते ना, छोड़ो ना टेंशन. इसमें क्या है? अरे शाहरुख खान ने उसके ऊपर इतना बड़ा गाना बनाया, he got so much money. शाहरुख खान का मूवी है ना? हाँ. अच्छा. चेन्नई एक्सप्रेस निकलता दिल्ली से. Right on. Kerala tropical climate. Punjab continental. अरे उधर ही है last. Let's come to the next factors affecting नहीं ना? Sorry. Distribution करो. Point heavy rainfall को put 1, moderate rainfall 2, low rainfall 3, and scanty rainfall 4. Now I'll explain this in a very simple. ये 1, 2, 3, and 4. Now, when the first sentence says distribution, underline rainfall is not evenly. 2 words के लिए कोई anybody can give 1 word? Evenly का हाँ. Unevenly. Very good. Unevenly. Very good. You're welcome. Unevenly. It mostly depends upon underline relief and direction. Okay, what is relief? Landforms, But क्या है? mountains, और plains. Please write down everyone. Relief के ऊपर mountains and plateaus. Mountains and plateaus about relief. ये मेरे साथ always पहला साल वो स्टार्टिंग होता था सर मेरे साथ. हाँ ठीक है. Now we are going into heavy rainfall. ये don't do play. Concentrate. ये बहुत एग्जाम में डायरेक्टली आता है. Underline rainfall. Put into bracket more than 200 centimeters. They will ask you what is the criteria. More than 200 centimeters. 200. Then it is heavy rainfall. Underline windward side. Underline western Ghats. Underline west coastal plain. Directly underline Assam and Meghalaya. And open bracket from eastern Himalayas. Close bracket in West Bengal. Now let us see moderate. Put into bracket between 100 to 200. ये एग्जाम में पूछते हैं. What is moderate? You have to write 100 to 200 centimeters. Areas, plains of Bihar and West Bengal. Eastern parts, you are underline peninsula. Eastern coast, Assam Valley and Purvanchal. Hey, what is Purvanchal all about? Are they part of Himalayas? वो देखिए. ऐसा मत बोलना. बार-बार अभी थोड़ा सा change करना है. You are 2/3 lecture old in my batch. This is the last time you are saying. घटिया improve it. Purvanchal anybody? उधर लिखना foothills. Himalayas का foothills. 9th में नहीं किया. Middle Himalayas, Greater Himalayas and Lesser Himalayas. Okay. And unfortunately, I was a lone teacher. सर पर ये नाम नहीं आया था आपको. ये दूसरी एक्सपीरियंस. आगे. पूर्वांचल हुआ where we are. Go down to low rainfall. क्या ब्रैकेट में डालना है? 50 to 100. हाँ, very good. 50 to 100. Yes. एरियाज मार्क कर लो. कर्नाटका, एपी, तमिलनाडु. देखो how girls are active. Rajasthan, Punjab, Haryana, Kashmir. Close the open bracket from Rajasthan and close bracket in Kashmir. ठीक है, that is okay. Then go down to scanty. उधर ब्रैकेट में डाल दो less than 50 centimeter. Rajasthan, J&K, and only underline करना southern Punjab. Now who can tell me why J&K is coming under scanty range? Board exam question. No. उधर लिखो more of snowfall. Rainfall कम होता है. More snowfall. लॉजिक है भाई. then underline rain shadow region. Rain shadow का और एक क्या है? किसी ने मुझे इधर बनाया था ना, वो कौन था भाई? ये इसको क्या बोलते हैं? ये windward है ना? ये windward, that is leeward. Very good. ये फ्यूचर का डायग्राम अभी बना दिया. Rain shadow के नीचे लिखो leeward side. Everyone write rain shadow के नीचे leeward side. Let us go down. Very important part. Factors affecting. ये notebook में लिखना. Only subheading लिख देना. Factors affecting climate.
Put number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points only. Subheading notebook में लिखना. I'm also writing along with you. Factors affecting. What is it? सिर्फ 4 ही आता है ना. नहीं, मतलब you have to learn all. It depends on the examiner style of question. What's the first one? Latitude, sir. Second one is distance from the sun. Influence of Mars. Now please understand this. I'll explain it in a very simple way. When you are writing in the board exam or in your school exam, you have to distance from the sun. No? Yes, Then it will be altitude. Next is surface winds. Yes sir. yes, sir. So order के साथ कैसे? What is it? Western disturbances. And last one? Jet streams. Jet streams. And? साथ ही है. R1 Okay, I'm sorry. Now look at this. Sir, distance from the sun. I missed it. So when you understand, these are the factors which are affecting. Now everyone drop your pens and understand what I am explaining in the board. When you are marking and writing, it will be very easy to remember what is the point of the verb. Because I said Maharashtra has moderate climate. Don't you think there are certain factors affecting it? Yes. And can you name? We have Western Ghats. We have Sahyadris. I think why Maharashtra is loved by people during the time of monsoon. One, we have this falls, waterfalls. In Marathi, what do you call? Zalzala. Dabdaba. Dabdaba. हमारे साथ एक प्रोफेसर पिकनिक गया था इधर. किधर गया था हम लोग? करजत में कोई टनल टॉप हिल स्टेशन था. And it was a wonderful picnic. 2 मिनट में बोल देता हूँ, ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा आपका टाइम. One was a mini bus for the ladies staff. वो जो बुढ़िया जो भी थी सब. और हम जो जेंट्स थे वो अलग स्टाफ था. और ये लेडीज स्टाफ हमेशा की तरह बस रुक गया आधा जगह पर. और इतना खतरनाक रास्ता था. एक तो हेवी रेनफॉल एंड योर खारगर नहीं करजत एंड हमारे जेंट्स स्टाफ उतर गए. मैडम हमारी बस में आएंगे. मैं बोला आप क्या जहन्नुम में जाएगा, चुपचाप बैठ, तुम कर रहे हो. एंड फाइनली वी हैव रीच्ड टू द टॉप. आई थिंक बाय 6 ओनली वी हैव रीच्ड एंड इट वाज हेवी रेनफॉल. करेक्ट. नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा एक दिन स्टे था उधर. नेक्स्ट मॉर्निंग हमको वो टनल टॉप पूरा एंड इट वाज वंडरफुल पिकनिक. वन टेंट वाज देयर फॉर 2 स्टाफ. मतलब अभी मैं मेरे साथ एक इंग्लिश प्रोफेसर था. इज फ्रॉम थाना, नॉट फ्रॉम हियर. तो हम लोग गपशप कर रहे थे. लाइट भी नहीं रहेगा, लालटेन नहीं रहेगा. And even the food is also cooked using that sigri and other thing. No like a city life. And हमको चना वना गरम करके दिया रातों रात. फिर हम लोग ने कुछ खाया भी. तो फॉरेस्ट फायर सब चालू था उन लोग का ग्रुप. नेक्स्ट मॉर्निंग उठा, ये अभी जो आप लोग से जो वर्ड हो धबधबा. तो एक गाइड आया, बोला चला सर हम जाऊया. बोला कुठे जाऊ? धबधबा. बोले ये क्या होता है? तो हमारा जो मराठी वाले थे, सर वाटरफॉल को धबधबा बोलते हैं. मैं पहले पर सुना था. And he took us to certain path. It was green. Rainfall was full green. And वो पूरा रास्ते में मराठी में बड़बड़ कर रहा था. But I could understand. वो इतना बोल रहा था कि हमारा ग्रुप छोड़ के आप अलग नहीं जाने का. तो मैं क्यों? ऐसा लास्ट टाइम वो 2 टीचर्स लोग आए, अभी तक गायब है. किधर गए गॉड नोस. बोले टीचर को क्यों बोला? वो लोग ही किसी का बात नहीं सुनते. ठीक है. फिर हम लोग गया and waterfall was huge. And he asked us not to go deep in. मैं बोला क्यों? बोले पत्थर गिरता है. बोले कितना बड़ा पत्थर? मैं बोला इतना नहीं, इतना बड़ा पत्थर भी गिरता है. तो मैंने बोला हेलमेट लेके डालता ना तुम. फिर मैं गया, फिर सब हुआ. फिर आई एम दैट इंग्लिश फेलो केम आउट. बहुत देर से पानी गिर रहा है तो इट वाज हेवी. ऐसा लग रहा है कि अपने ऊपर वो ट्रैक्टर या कुछ चढ़ेगा तो कितना दर्द होगा, उतना था. तो हम लोग रुका था. फिर बाहर आया तो सर को शायद किसी से बात करना था. मैं बोला सर मैं टेंट तक जाता हूँ. रुको सर मैं आता हूँ. बोला हाँ मैं नहीं रहता. मैं गया. तो जैसा वो टिप्स एंड टर्न्स था, मैं आधा दूर आ गया. पर मुझे एक जगह पर एक कट है, राइट और लेफ्ट. मुझे लगा शायद राइट से हम लोग बाहर आए, नहीं लेफ्ट से. मैं लेफ्ट पकड़ लिया.
आधा दूर गया, it was not leading to a tent, it was going somewhere inside the jungle. उधर मोबाइल नहीं है, नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं. हाँ, फिर मैं बोला बेस्ट आइडिया है, चुपचाप अपना रास्ता निकलो. रिटर्न आया वो टर्न में आया. तभी तक ये इंग्लिश प्रोफेसर गए. सर आप कहाँ चले गए थे? बोला नहीं ऐसे वो कुछ बकरी उकरी दिखा. Why I'm saying Maharashtra during rainy season is highly picturesque location. फिर और एक छोटा लोनावाला जाते हैं. अभी भी मुझे समझ में नहीं आता ये अपना 10 रुपए का मैगी उधर 50 रुपए में मिलता है. एंड वी गो विथ आवर बाइक्स. एक 40-50 बाइक जाता है तो उधर सर मैगी खाएंगे. मैगी मतलब कभी खाया नहीं किसी. एंड वो मैगी को 50 रुपए देने का और वो उतना बारिश में खाने का तो मुझे गुस्सा आता है. एंड फिर वो क्या मूंगफली, व्हाट डू यू कॉल इट मराठी मूंगफली, हाँ वो चालू रहता है. सर चला सर शेंगदाना खाओ ये, वो 30 रुपए और 4 ही उसमें. सर इसका मजा उठाओ सर. मतलब काय का मजा उठाओ. आप हर जगह इकोनॉमिक्स टीचर है, बिलीव करते हर जगह पैसा कैलकुलेट करते. मतलब बराबर है 10 रुपए का मैगी या 50 रुपए में खाया. एंड लोनावाला इज सच प्लेस इफ यू गो विथ योर फैमिली मेंबर्स ना ड्यूरिंग द रेनी सीजन, द क्लाउड्स रियली डिसेंड. एंड उधर एक मंकी ब्रिज करके आता है, मंकी फॉल्स या मंकी ब्रिज. अभी भी उस ब्रिज में मंकीज तो है, आई एम नॉट सेइंग नो, बट वो ब्रिज इतना गंदा है. मैंने रात को 9 बजे भी कभी गाड़ी भगाया है. नॉट दिस वन व्हिच आई एम राइडिंग नाउ, हार्ली डेविडसन. एंड उस गाड़ी को थोड़ा भी अगर स्क्रैच गया तो आई हैव टू पे टू द फेलो मिनिमम 1.5 lakhs of rupees. 25 लाख का गाड़ी है. एंड मेरा दोस्त बोला ओए राइड मार फिर पॉकेट से तेरा जाएगा पैसा. एंड इट इज 9:30 पिच डार्क. लाइट का सब अच्छा है, बट थोड़ा भी अगर मैं टिप्स एंड टर्न्स में छोड़ दिया ना, हार्ली डेविडसन जा रहा है वो दूसरी बात है, मैं भी जाऊंगा साथ. So why I'm giving all this? With the rainfall coming, you must. I think Maharashtrians are many here, ना? You must visit. Then फिर हम लोग नासिक में अशोका waterfalls गया था. उसका स्टोरी मैं अलग से सुना था. That was a different one. Okay, why I'm saying ये जो climate rainfall आने की वजह से इंडिया में कितना सारा physical changes होता है. And the best place to see our own place. अभी ये लोग कोंडाना फोर्ट कुछ तो बोल रहा है, तो वो देखते हैं अभी राइड मार सकता है कि नहीं. तो पहला है लैटिट्यूड. समझा? इफ यू रिमेंबर लैटिट्यूड, व्हाट वाज गार्गी थिंकिंग? Although my story was on, I was looking at it carefully. ये है इंडिया नॉर्थ ईस्ट, करेक्ट है लोकेशन. If India is away from equator and if India is also away from poles, latitude, correct? So we are saying it is tropical climate. Tropical climate. Why? Because of its latitudinal distance from where? From the equator. Abhi samajh mein aaya how latitude affects our climate? Second, influence of the Himalayas. Can anybody tell me? I think where is my beautiful Himalayas? Somewhere here. Yes. Normally we call Himalayas as a which divide? We call it as a climatic divide. Come on, please write somewhere in your notebook. Himalayas are climatic divide. या second point के उधर भी लिख सकता है अगर जहाँ लिखा आपने. Because of two main reasons. First reason उधर लिखना, prevents strong cold Tibet winds. हाँ, very good. Prevent strong Tibetan cold winds. Prevents भी नहीं लिखा, stops लिखो. Tibetan strong cold winds to obstruct. Obstructs the rain-bearing clouds. Obstructs the rain-bearing clouds. Okay. Now that is eye to eye, language to language. So if these Himalayas are removed from India, one, Punjab farmers will not have any wheat farming. जो इंडिया में सबसे best farm है wheat के लिए, because वो पूरा Tibetan winds आएगा उनको freeze कर देगा. दूसरा हमारा जो clouds है, it will escape to Tibet. Is it not influencing the climate? Next, distance from the sea. This is very simple. Maharashtra, Mumbai, closer to Arabian Sea. Which breeze we have? Land breeze and sea breeze. Now you look such wonderfully you are answering. Land breeze and sea breeze. Correct? So what is the climate of Mumbai? Moderate. We have Delhi, Chandigarh, extreme climate. Are they away from the sea? Yes. Next we have altitude. It's very simple.
I think that Khaldir people only ask me. I say this is a mountain. We have a small village here. Bear with my village. Okay. Then we have a ground level. We have a big village here. And we have wonderful sunlight which is glittering and shining. Not glittering, shining. Now then we have the temperature of the ground will be more or the temperature will be more here. Tell me. The ground will be more because the land gets heated faster than Very the good. We say the word generally the sun heats the earth's surface first. Then the radiation moves. Which radiation? Sun's radiation, not nuclear radiations. Huh? So sun's radiation moves. The far you are from the ground, the lower will be the Normal wraps. 2 degree for every one degree of warmth. Correct, very good. So ये क्या है? जो ground level पर जो village है वो ज़्यादा गर्म रहेगा, and which is little bit at a higher altitude will be cooler. That's why we have hill station like Mahabaleshwar. So now I say altitude. Lower is the altitude, higher will be the temperature. Higher is the altitude, lower will be the temperature. Is it clear? Next we have surface winds. इसमें दो wind है. We have this wind called Lu, L-O-O. ये generally north side को blow होता है. Very good. Hot and humid. Yes. And they bring in lot of scorchy appearance. Then we have something called as jet stream somewhere here. The word is jet because the speed of the wind is 25 nautical miles. 12 किलोमीटर का स्पीड से हो जाता है. अब बोलेगा 12 किलोमीटर मतलब कम. समटाइम्स आई हैव सीन स्मॉल बच्चास टेकिंग अम्ब्रेलास. वो हवा इतना तेज रहता है अम्ब्रेला के साथ तो जंप मार के जाता है. ज्यादा टाइम नहीं रहता, थोड़ा टाइम के लिए. सो उसका डबल स्पीड है जेट स्ट्रीम. सो दे ब्रिंग लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस. आइदर दे ब्रिंग इन क्लाउड्स और दे टेक अवे द क्लाउड्स अलोंग विद देम. एंड द लास्ट वी हैव दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. अगर आप अपना मैप में देखेंगे ना ऐसा कुछ दिया रहेगा JNK and ऐसा arrow mark किया. Western disturbances enter from the west of the country and they bring something called as thundering, lightning, rainfall. You remember? हम लोग ने कल बैशाखी करके बोला रहेगा. Yes, sir. वो कोलकाता में आता है. So these western disturbances can influence the ordinary climate which is going on at that time. So what is the factors? Come on. So shall I give you only one question assignment? Please write the assignment. I know you're fine. Oh, अभी तो बहुत कम दे रहा हूँ. Explain all the factors. Explain the factors affecting the Indian climate. हाँ जी. हाँ तो फिर से लिखना है. ये ना. तुम्हारा टाइम नहीं लेने का करके बोल रहा हूँ. बुक में दिया है, ये दिया है. Explain the factors affecting the Indian climate. I want all the points one below the other with your own marking and writing. अभी समझ में आया? Thank you and lovely meeting you again. God bless you all. I'll see you on coming Saturday. Okay? If I दूसरे समय किसी को कुछ बोला तो please sorry. Sir, exam. इस बात के. First unit. अभी टाइम है ना अभी. When? Friday. I'm coming on Saturday. Now when is my paper? सर आपका ट्यूसडे को है. संडे को है. End stream कर दे. संडे को बनाए सर. एंड स्ट्रेट Which school is that? 7 days. You tell the department they will inform you. I'll come and